I have had these mental health struggles since the age of 16. So the first time I went to therapy was at the age of 16. And I've talked about this many times before as well. But it's just something that's important for at least kids, even if they watch this, that if you're 16, it's fine to go to therapy. मुझे फ्लू है, मैं जाके अल्लाह ताला से बोलता हूँ, अल्लाह ताला मेरा फ्लू सही कर दे. Yes, अल्लाह सही कर देगा, लेकिन अल्लाह does not change the situation of a nation until they change what is within themselves. ये अल्लाह के लफ्ज़ हैं. तो अगर आप बैठ के एक कोने के अंदर बोलते रहोगे मैं दुआ कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं सही हो जाऊंगा, मेरी इलनेस खत्म हो जाएगी, मेरा कैंसर खत्म हो जाएगा, मेरा ये खत्म हो जाएगा, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? Love and belongingness and validation is a part of human nature. So if you ever say that I'm not gonna chase validation, I'm not gonna chase somebody's love or somebody's approval, you are actually making yourself fool, because we have to chase that. We want that. We want that to build a human connection. We want that to build a community and love and belongingness, and we need it. I genuinely was about to kill myself. So if you hear this and you're going through something like this, I would love to share my story and how I wasn't able to kill myself and how you shouldn't be able to kill yourself either. Because I had a noose on my neck at one point and I had written a suicide note. I was in that situation. This is the reason why I shared what I shared. I was invited by Google. I couldn't share that with my family. Why couldn't I share that with my family? Because I'm still in uni. Why am I wasting my time on going to Google events? हमें पता नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है. So most of the time, everyday life में दिल में भी कुछ हो रहा है, दिमाग में भी कुछ हो रहा है, स्टमक में भी कुछ हो रहा है, लेग्स में भी कुछ हो रहा है, हर टाइम बेचैनी सी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बेचैनी है, बस बेचैनी है. Umar, when it comes to breaking down the stereotypes, I think when I've seen you, I've seen your work, but when I spoke with you, वो बिल्कुल ही एक अलग कहानी थी. जो आप नज़र आते हो सोशल मीडिया पे, it's not something that you actually feel also. Yeah. It's not about that कि आप वो नहीं हो, but it's about कि आप वो फील नहीं करते. मतलब अगर सोशल मीडिया पे हम आपको देखें तो बहुत ही एनर्जेटिक अपना काम कर रहे हो, इतनी ज़्यादा सक्सेस आपने इस उम्र में आपने हासिल की है, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के साथ साथ. Oh yeah, 100%. And so here's the thing. I have had these mental health struggles since the age of 16. So the first time I went to therapy was at the age of 16. And I've talked about this many times before as well, but it's just something that's important for at least kids, even if they watch this, that if you're 16, it's fine to go to therapy. And so now I'm 26 and I've learned many things because of that. And due to my therapist and the things that they taught me and the this one thing that they taught me was exposure therapy. Now, exposure therapy is a phenomenal thing for me, at least for me it was. And where I had to vividly really remember what exactly happened, like the scent, the smell, the movements, the sounds, this, that, of a trauma that happened in the past. So I relive it, because one thing that if you go to a psychologist, and you would hopefully inshallah agree with this as well, if it's right, is that you don't become less afraid, you just become more brave about the situation. So it's not like the situation is making you less afraid, it's just that you can deal with it because you're more brave now, because you can face it, see it, look at it, read it, feel it, and then say it happened, let's let it pass. And then you keep doing that over and over and over and over again for, like, I would do that for 2-3 weeks. I would write down as vividly as possibly as I possibly can, and then read it thoroughly over and over again and let my body feel all of it throughout. And when I started doing that, I started dealing with certain traumas. But then that's not to say that at least the traumas, whatever that I had, the things that I was dealing with, were, yeah, they can be fixed with like behavior therapy at least. But there are certain things in my life that were so bizarre that if I do exposure therapy, then I think I will just become very suicidal. So it's like it's very subjective. विच इज़ वाई आई थिंक आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि हर तरह की थेरेप्यूटिक टेक्निक जो है वो हर तरह के चैलेंज के लिए नहीं होती. जो आप बात कर रहे हो एंग्जाइटी की या ट्रॉमा की, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट EMDR, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो भागने की बजाय. और यही बेसिक पर्पस होता है थेरेपी के लिए जाने के लिए, कि आप वैसे अगर तो लाइफ में हो तो जहन में ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं क्योंकि हमेशा बैकग्राउंड में रहती हैं, बट द मोमेंट यू गो फॉर थेरेपी, यू सिट डाउन, you actually face what's going on in my head, what I'm thinking, what I'm feeling. So the moment you do it, it all comes to your frontal lobe. So this is how you will be able to process it. So
But Umar, we would like to go back when you say 16 years old. Yeah. वो मैं इमेजिन कर रही हूँ 10 साल पहले, और मैं आई थिंक 11 ईयर्स पहले, अराउंड 11 ईयर्स पहले मैंने आई लेफ्ट पाकिस्तान. बैक देन जब Right मेरी before I got depressed. right before you got depressed, so you couldn't get my professional I help. was like, where is she? That's a bummer. That's a bummer. हाँ, तो बैक देन जब मेरी ट्रेनिंग का टाइम चल रहा था, फैसलाबाद से हूँ मैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है एज़ कम्पेरेटिव टू कराची, बिकॉज इट्स अ बिग सिटी, और आप कराची से हो. Yes. ओके, सो अगर आप हमें 10 साल पहले का माहौल वहाँ पे समझाएं कि जब आपने सोचा कि आई नीड हेल्प, हु वाज इट? ये आपका आइडिया था या आपके पेरेंट्स का आइडिया था, या हु फिगर्ड इट आउट कि मे बी यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प? 10 साल पहले वही 16 साल का था. एंड मेरे साथ एक मसला ये था कि मैं कंपेयर बहुत करता था अपने आप को. Okay. सो मैं अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन और ये वो, लाइक दिस वाज अ थिंग दैट वाज विद इन मी. एंड आई डोंट नो, मे बी आई ग्रू अप लाइक दैट, व्हाटएवर, आई डोंट नो. एंड आई स्टार्ट नोटिसिंग दिस, एंड देन इट वुड ब्रिंग माय लाइक मूड डाउन ड्रामेटिकली, इंटेंसली. एंड I started having these. It started with that, and then slowly, it became something to the point where it was like there's so much pain within my body that it hurts and it brings me down on the floor. Like, what is this? Like, there's one thing to compare yourself with someone and try to have like a healthy competition. Then there's another thing that not only is it like it starts with the comparison, but it goes into like, oh, you're absolutely nothing, you know? So tum kuch bhi nahi ho. So when it gets to that, and this negative self-talk constantly, this negative self-talk was too much. And my mom had, like, I've seen her, she has insane depression. So I've seen depression in my life throughout. I've seen the sort of reactions that people have. I've seen the sort of like behavior or whatever it is that depressed people have. And for me, in order to see that firsthand, because my mom is so like she's clinically depressed. She was clinically depressed. She is clinically depressed, and I wasn't. So when I saw that, I was like, this is not something that I want to become. And even in the slightest bit, if I am getting to, अगर मैं उस point पे पहुंच रहा हूँ, हल्का फुल्का comparison वगैरह जो भी है, whatever that reason is, I'll go and do that. So I shared it with my mom. मैंने अपनी अम्मी से शेयर किया, मैंने अपने अब्बू से शेयर किया. मैंने कहा ये मुझे अच्छी नहीं लगती चीज़. And my mom was going through a lot of this as well. So she's like, अभी इसको पिक करते हैं, अभी इसको सही करते हैं. So we went to Dr. Abdul Qadir Khan Rehabilitation Center. That's what it was called. That's what it is called. ये कराची के अंदर मौसमियात पे. And 10 years ago, I went to that. It's a huge facility. And सिर्फ एक थेरेपिस्ट बैठी हुई थी उधर. सिर्फ एक थेरेपिस्ट थी, फारिग होती थी पूरा वक्त. And she was very like proper, and she had her patients, but it's like she would have like 2 patients maybe every 3 days. And she would get really excited when she would have a patient, and पूरी जगह खाली पड़ी होती थी. कोई बुक नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई जानता भी नहीं, कोई बात भी नहीं करता इसके बारे में, क्योंकि it's like तुम पागल हो अगर तुम इधर हो, क्योंकि it's titled as a rehabilitation center. So if you label something as like psychiatric rehabilitation center, then people get scared because it's such big words. And then if psychiatric डाल दो तो लगता है कि भाई अब पागल ही हो तुम, और पागल लोग ही जाते हैं अंदर. Which is not the case in the slightest. And if अगर पागल लोग जाते हैं, bro, मैं भी पागल ही फील कर रहा हूँ अभी, you know, मैं कोई normal फील नहीं कर रहा. तो it's better that I go there and then sort of fix that and then come back, you know. So that's where I went, did that for 2 years. It actually helped immensely. And then so back then, 10 years ago, it was nothing. Now if you go to Karachi, the shift is crazy. For you to find a therapist, any therapist whatsoever, it's like it's not even about good, bad, whatever. Any therapist whatsoever, fully booked, 2-3 months. You can't get a slot. You get a slot like अगर मैं अभी बोलूँगा मुझे February का slot मिलेगा. And it's good. The stigma is gone. It opens up opportunities for online therapy sessions to happen, such as BetterHelp, things like that started coming in. Pakistan is also, मेरे कुछ दोस्त हैं जो startups वगैरह काम करते हैं, because that was my initial work, because I was working in startups as soon as I graduated, and I had my own startup which I sold, blah blah. We'll talk about that later, but like my friends are working on these BetterHelp type like therapy things as well, like these startups that connect you to real therapists and real psychologists on real time, and then give you these like solutions, blah blah blah. So
पाकिस्तान में ये conversation is no longer, in my opinion, no longer a stigma, no longer something that people are ashamed of bringing up, no longer something that people are scared of bringing up or even talking about blatantly out front. लेकिन वो जो स्टिग्मा फैमिलीज़ के अंदर होता है ना, वो एग्जिस्ट करता है. रिगार्डलेस मैं पूरी दुनिया के से शेयर कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरा पब्लिक अकाउंट है, मेरा 50,000 फॉलोअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सब कुछ उनसे शेयर कर रहा हूँ. मैं घर में नहीं शेयर कर सकता. So initially I could share it, but then at the age of 19, 18 when I was in uni, I couldn't share it. क्या बदला? मैं शेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो. अब तुम बड़े हो गए, तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. ये तो हर मर्द के साथ होता है, हर मर्द को इसको डील करना है. और हर मर्द को जो है ना, अब क्या कहते हैं, वो बस लाइक अगर तुम अब ये इस थेरेपी में जाओगे तो तुम एक वीक मर्द हो. That was the belief. That was the स्टीरियोटाइप तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक इंग्रेव बिलीव हो गया था. हाँ, और वो अभी भी है. वो अभी भी है कि तुम्हारे अंदर मसला है. अगर तुम्हारे अंदर कोई साइकियाट्रिक मसला हो, तुम थेरेपी का कह रहे हो? पागल है क्या कर रहा है? यू नो, कोई मसला है क्या? मतलब मर्द है, थोड़ा बस चिल कर नमाज पढ़, सीधा हो जा. तो नॉट टू से नमाज हेल्प नहीं करती, नमाज ने इतना हेल्प किया कि अल्लाह की तो अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन भाई मुझे फ्लू है, मैं जाके अल्लाह ताला से बोलता हूँ, अल्लाह ताला मेरा फ्लू सही कर दें. यस, अल्लाह सही कर देगा, लेकिन अल्लाह डज नॉट चेंज द सिचुएशन ऑफ अ नेशन अंटिल दे चेंज व्हाट इज विदिन देमसेल्व्स. ये अल्लाह के लफ्ज़ हैं. तो अगर आप बैठ के एक कोने के अंदर बोलते रहोगे मैं दुआ कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं सही हो जाऊँगा, मेरी इलनेस खत्म हो जाएगी, मेरा कैंसर खत्म हो जाएगा, मेरा ये खत्म हो जाएगा, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? और आप बोल रहे हो कि अल्लाह हेल्प कर देगा, जबकि अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प चेंज नहीं करूँगा जब तक तुम अपने आप को खुद चेंज नहीं करोगे. सो इट वाज जस्ट दैट. एंड देन वो यूनी के अंदर आई हैड टू हाइड इट. मैं ब्रेक्स लेता था, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर बीच में ब्रेक्स होती थी. आई वुड कॉल माय थेरेपिस्ट, आई हैड माय सेशन, आई वुड गो देयर, टैक्सी रिक्शा में बैठता था, अपना थेरेपी सेशन लेता था. 1 to 2 PM मेरी ब्रेक होती थी. 1 to 2 PM मेरा थेरेपी सेशन हुआ. भागा मैं थेरेपी में और लिया 1-1.5 घंटे का वो सेशन लिया. दूसरी क्लास जो 2 PM पे स्टार्ट होती है वो 2:15, 2:20, 2:30 में आई रीच किया. गुड थिंग मेरा थेरेपी जो थेरेपिस्ट थी वो 10 मिनट्स दूर थी मेरी यूनिवर्सिटी से. तो मतलब जा रहा हूँ मैं उनसे, एंड आई डिड दिस एंड आई हिड दिस कंप्लीटली फ्रॉम माय पेरेंट्स. लाइक एवरी सिंगल थिंग आई वाज पेइंग फॉर ऑन माय ओन. आई वाज पेइंग फॉर माय यूनी, आई वाज पेइंग फॉर माय थेरेपी सेशंस, आई वाज पेइंग फॉर एवरी सिंगल थिंग ऑन माय ओन, एंड आई डिडंट लेट देम इवन स्लाइटली नो दैट आई वाज गोइंग थ्रू दिस. फॉर मी दिस इज समथिंग लाइक आई वुड रियली लाइक टू हाईलाइट. जब आप 16 के हो तो इट्स वेरी ओपन, बच्चा है, इसको हेल्प दिलाते हैं. लेकिन जैसे ही 18-19 हुए हो तभी सारा वो एक्सपेक्टेशन चेंज हो गए. सो बेसिकली ये हमारे कल्चर में एक्सपेक्टेशन है ना, क्योंकि मर्द को घर चलाना होता है. एग्जैक्टली. और ऊपर से अगर आप सिर्फ इकलौते बेटे हो ना, ओ हो. I saw this reel the other day that the most depressed kid, the most depressed person in the entire family is not the father, is not the mother, is not the sister, is not this, it's the eldest son. क्योंकि उसके ऊपर सारी वो प्रेशर्स डाल दिए जाते हैं. उसको बोला जाता है ये, और ये झूठ नहीं है, प्रॉपर सारे प्रेशर डाले जाते हैं. उसको बोला जाता है कि ये सब सॉर्ट आउट करो, सबके सेवियर बनो, हर किसी को प्रोवाइड करो, हर किसी को ये करो, एंड यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक. अगर ब्रेक करोगे तुम फ्रैजाइल हो, तुम टूट जाओगे, यू आर नॉट अलाउड टू. So and that is how I live my life. I've lived my life like this. So that also played a massive role as well. I think so. और ये आप अकेले नहीं हो जो ये बात कर रहे हो. आई थिंक जिससे भी मैं बात करती हूँ या जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारे सोसाइटी में जो बड़ा बच्चा है, चाहे वो बेटी है या बेटा है, सब बहुत सारे फैमिलीज़ में मैंने बेटियों को भी देखा है, लेकिन ख़ास तौर पे बेटे का, कि अगर आप बड़ा बेटा हो तो अब समझो कि छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी तो आपकी किस्मत में लिख दी गई है. मेरी किस्मत में लिख दी गई. यूनिवर्सिटी के पैसे उसके देने, उसके खर्ची देनी, उसका ये करना, उसका वो करना, उसका वो करना. मैंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी अभी स्टार्ट की है. मैं ओके इंशाल्लाह अल्लाह करा देगा. लेकिन नो, बट आई डू गेट दैट कि वो जो एल्डेस्ट चाइल्ड के ऊपर जो प्रेशर होता है, कोई भी उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि समहाउ अनस्पोकनली दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन गिवन टू यू, और आपको करना ही है. और अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप अच्छा बेटा नहीं हो. इट्स नॉट इवन दैट. अच्छा बेटा छोड़ो, दे आर अशेम्ड ऑफ यू. द अदर डे लेट्स टॉक अबाउट दिस. Around 3-4 days ago, I get a call from my parents, and I have these intense work weeks. So, alhamdulillah, mashallah, I run this media production business. So I have about 12 to 13 people that I have that are working under me. Alhamdulillah, subhanallah, mashallah, I'm very happy about that. It took me a year to do that. Which is exceptional. So obviously there's a lot of work that goes into it. There's a lot of effort that goes into it. Like literally my wife is sitting outside editing a video as we speak because we have another shoot that we have to go to for at City Walk, blah, blah, blah. Like all of these things, right? So it really struck a chord, and it was really beautiful that you said that you didn't let any of the तुमने किसी भी चीज़ को जो है ना, ये अपने डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, इलनेस, ये वो सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं करने दिया अपने आप को.
And I think there's a lot to say that yes, you could be going through. Bro, I am diagnosed as clinically depressed. I am diagnosed with acute OCD. Acute OCD is a proper thing, right? मैं गलत नहीं बोल रहा. Like it's like a slight OCD mild level. Mild level OCD. Mild level OCD and intense ADHD. Okay. So clinically depressed पे खत्म हो जानी चाहिए बात, लेकिन चलो extra भी बता दी आपको. You know. So I'm diagnosed with all of these things. I'm on these medications as well, and I don't label myself as this because I see this as ये एक part of my life है, ये एक phase of my life है जो कि मुझे overcome करना है, because this is how I see it. If I am put into abnormal sort of test, you know, hear me out. If I am put through abnormal sort of test and मेरा mentally मुझे इस तरीके से strong किया जा रहा है कि I'm being put through these sort of trials and this and this and this and this. The thing is, Allah subhanahu wa ta'ala says that I create, like, Allah subhanahu wa ta'ala said this to Musa alayhi salam, and I'm sorry if I'm paraphrasing as well, so इसका मफहूम ये था कि क्या कहते हैं, हमने तुम्हें हम तुम्हारे अंदर we created you and we put all of these trials within you so we can create you as the way we want to make you. So basically what that means is कि अल्लाह ताला आपको इन टेस्ट ट्रायल्स इन सब चीज़ों के थ्रू पुट थ्रू करता है, because he's trying to create, because the character is malleable, right? So he's trying to create you the person into the person that he wants you to become, because तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम्हारे ख्वाहिशात बहुत बड़ी, in the sense of तुम्हें गाड़ियाँ नहीं चाहिए, तुम्हें यतीम खाना खोलना है. तो ज़रा ये ट्रॉमा, ये चीज़ डील कर लो इन योर 20s, ताकि 30, 40, 50, 60s के अंदर तुम एक लेगेसी क्रिएट कर दो. नाउ दिस इज़ हाउ आई थिंक अबाउट इट, एंड दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग. सो इफ़ यू लेबल योर सेल्फ एज लाइक मैं डिप्रेस हूँ तो डिप्रेस हूँ, मुझे ADHD तुम ADHD है, ओके कूल, लेबल कर लो, लेकिन उसके बाद क्या आप घर बैठे रहोगे बोलते रहोगे मैं डिप्रेस हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर सकता. सो इट्स ऑल अबाउट regulating your emotions to a point where if you're depressed, what I do is I go take a swim. मुझे अगर एक डिप्रेशन अटैक आ रहा है, मैं जाके स्विम करना शुरू कर दूंगा, और मैं स्विम करता रहूँगा, मैं लैप्स लेता रहूँगा जब तक मेरी endorphins like they're not skyrocketing. If I feel like I'm about to have an intense mental breakdown, मैं जिम चला जाऊँगा. You know, these are counteractive. These are productive things that I'm doing that are counteracting. You know, counter whatever. जो काउंटर करें इस चीज़ को, you know, उर्दू में बात कर लेते हैं, इंग्लिश बहुत हो गई. इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं behavioral activation. मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है. So it's like replacing those sort of things with this. And then, yeah, everyone says that and it's like, annoying ये वो. लेकिन if you live in Dubai, bro, आपके घर में, आपके अपार्टमेंट के अंदर डेफिनेटली पूल होगा, आपके अपार्टमेंट के अंदर डेफिनेटली जिम होगा. ठीक है, रिगार्डलेस आप कहीं भी रह रहे हो, ये दो चीज़ें तो होंगी ही होंगी. हल्का सा फील करो, जाओ घुस जाओ पानी के अंदर, 2, 3, 4, 5, 6, 10 लैप्स लो, या फिर लिटरली कार्डियो करो 10 मिनट का, सही हो जाओगे. एंड नॉट इन द सेंस सही हो जाओगे, तुम्हारा माइंड रीडायरेक्ट हो जाएगा, तुम्हारे ऑक्सीजन पहुंचेगा, तुम डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, एंड इट रियली हेल्प्स. ऐसा नहीं है कि ये जो बिहेवियरल एक्टिवेशन होती है, ऐसा नहीं है कि ये आपको क्योर कर देता है. इट जस्ट रिचार्जेस यू टू फिगर आउट एंड टू अडेप्ट विद द अपकमिंग थिंग्स. सो बेसिकली आपकी रिजिलियंस जो है वो इससे बढ़ती है. आप अगर लो मूड में हो तो थोड़ा रन कर लो, जैसे आपने बोला 10 मिनट्स, तो आप एकदम से बूस्ट कर जाओगे, तो फिर आप कुछ अच्छा कर पाओगे. अदरवाइज आप उसी ही मेंटालिटी में रहोगे, चाहे 24 घंटे बैठे रहो बेड पे, चाहे 48 आवर्स बैठे रहो. सैड हो तो सैड गाने सुन रहे हैं, तो क्यों, मतलब सैड होके सैड गाने क्यों सुने जा रहे हैं, ताकि और सैड हो. हाँ जी, लाइक ये कैसे, और फिर कहते हो यार मैं सैड क्यों, यार तुम सैड गाने भी तो सुन रहे हो. तुम सैड अपने आप को इस तरीके से फील भी तो करा रहे हो, लाइक you brought your vibrational frequency to such a low level, because this is what मेरा belief यही है कि higher frequency is God frequency. Like Allah subhanahu wa ta'ala, he puts in hope, all of these things. These are high frequency things, you know. So having hope, having tawakkul, having taqwa, having all of these things, this is high frequency. Okay. Belief in Allah, you know. Very high frequency. So if a shaitan comes in and then, or any whatever comes into your mind, and then it starts saying, yeah, but like it starts creating doubt. The first thing it enters is doubt. Doubt enter होता है. उसके बाद fear enter होता है. उसके बाद, and that's why Paul Atreides from Dune says fear is the mind killer. It genuinely kills your mind. And then on top of that, so ये छोटी चीज़ें ये आपके अंदर ऐड होती हैं, आपके अंदर डाउट क्रिएट होगा, आपके अंदर फियर क्रिएट होगा, and then now you're vibrating on such a lower frequency that you feel like nothing. And
if you look at these biblical stories, or if you look at Quranic stories, if you look at Musa alayhi salam, if you look at any one of these prophets, you will find out that they were always stuck in situations where there was absolutely zero way out of it. Zero way out. If you look at Surah Hazrat Yunus, this is the beautiful. This is how I make arguments, but not arguments, but like this is how I converse. But because I tell these sort of like stories, and anyways, if you look at Hazrat Yunus alayhi salam story, it's beautiful because he was stuck in the belly of the whale. Okay. The cool thing about something that you might not know about Prophet Yunus alayhi salam is that he was sent to the Byzantine, he was sent to an empire, and then he was sent to his people, and there were 100,000 people. He was sent there, and he was told, "Jaake inko, Islam sikhao, ye sab redirect karo, sab kuch karo." He went there, and the people rejected him so badly, unka dil tood gaya. उन्होंने कहा, उनको गुस्सा भी आ गया, उन्होंने गुस्सा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका हार्ट दिल टूट गया, उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा ये, बस अल्लाह ताला. And he left his people, and he went back. ठीक है. Now when he's on his ship back, so they were drawing straws because storm आ रहा है. अब जब ये अल्लाह ताला से उन्होंने शिकवा की, वो storm जो है जाके वो उन लोगों पे आ रहा है, क्रिश्चियन जो भी यहूदी थे उस वक्त, जो भी थे उनके ऊपर जो है वो storm आ रहा है. They can see it coming, but it's very far away, but it's not directed toward Prophet Yunus alayhi salam. It's only directed toward these people. So now they see it, and all 100,000 of them repent, and then they accept Islam. He's the only prophet jiski puri ummah ne Islam accept kar liya tha, even though he left the ummah, right? So now he's on a ship, and they're trying to throw things overboard because storm ye wo, and then they start drawing straws. कि जिसके बाद छोटा वाला आएगा, they start drawing sticks. So जिसके बाद छोटी stick आएगी, उसको उसके सामान के साथ overboard फेंक दिया जाएगा. Hazrat Yunus alayhi salam, Prophet Yunus alayhi salam got the smaller stick. So they took his stuff, they took him and threw it overboard. They threw him overboard, and through the miracle of Allah, he got stuck in the belly of the whale. Now he's in the belly of the whale. He left his ummah, he left his ummah, he's now here, he's stuck here. And then he sits there, and he's not like मैं अल्लाह ताला ये वो कुछ भी, he just repents. All he does, अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई, and then he makes one of the most popular dua, the most famous dua, one of the best duas that you should make is La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. It ends with, indeed I have been one of the transgressors, मैंने गुनाह किया. He kept on saying this, दुआ करते रहे, like माफ़ी मांगते रहे, मग़फ़िरत मिली. अल्लाह ताला ने got him out of the belly of the whale, threw him on the island. His body was covered in जो भी चीज़ें, and then it was so bad कि sun hit कर रहा था, तो उनकी body जल रही, जो भी हो रहा था. I'm sorry अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, लेकिन जो भी हो रहा था उनकी body ख़राब हो रही थी. Allah with his mercy built grew a tree that was covering him so that he can be fine, and then by the time he's fine, he goes back to the people and they accept him because they've already accepted him. So even in the Quran, Allah Ta'ala says, don't be like Yunus at one point. Don't be like Yunus alayhi salam, which is like crazy. Like, why can't it be like the Prophet? Oh, because he left his ummah. He left his people. Anyways, it's just, it's very interesting. Bit of ADHD kicked in. Because you were going to tell us, like, your mom and your sister and your dad called. And then we just shifted, right? So yeah, it's just we want to know what happened 3-4 days ago. Let's go back to that. Okay, so 3-4 days ago, they called me, working all day, blah, blah, blah. I came back home at 9 p.m. I was also in a meeting. So I'm in my car, I'm on my phone, I'm in a meeting, and that meeting's going on, that is continuing, and they're giving me approvals, telling me this, it's a strategy meeting. And once we're done with that, while I'm in that meeting, I start getting a call from my mom and my sister, and my mom and my sister. My sister lives in Canada, my mom lives in Pakistan, and I hadn't talked to my mom in around 15 days because I hadn't talked to her, and my sister hadn't talked to her in about a month because she's busy. She has 2 kids, mashallah, alhamdulillah. She lives in Canada, so uska time zone bhi bahut different hai, to difficult hota hai call karna. She works as well, so obviously agar mujhse time nahi nikala, tumse kahan niklega, bro? So the fact that she called, I was like, oh, alhamdulillah. So I cut the meeting short. I said, guys, my family's calling. I haven't talked to them in a month. I'll call you, meeting tum log kar lo. And let's just end it here. Let's do it tomorrow. And I got done. मैंने call काटी, मैंने foreign call accept की, मैंने call उठाई, and I'm very excited. I pick up the phone and I'm like, अस्सलाम वालेकुम, how are you? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. Finally सारी family बैठी हुई है. It's nice to, सब पूरी family बैठी हुई है. And
स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली दिस इज हाउ द पाकिस्तानी पीपल स्टार्ट, यू नो. पाकिस्तानी फैमिली स्टार्ट करती है, अस्सलाम बेटा कैसे हो, ठीक ठाक हो, तबीयत सही है, खाना वाना खा लिया, ये कर लिया वो कर लिया. मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है. एंड देन दे ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट basically just, I wouldn't call it a lecture, I would call it a ambush. They ambushed me. And पहले बहन एक बात करती है, फिर अम्मी बात करती हैं, फिर अब्बू चीख रहे हैं, ये 3 लोग चीख रहे हैं बस मेरे पास. 35 minutes I'm quiet, कुछ नहीं, चुप. I'm like, मैंने किया क्या है bro? And I'm just thinking, मैंने किया क्या है? Literally I hadn't done anything, I swear wallah, I haven't done anything. What have I done? And they keep on bringing up the fact that they are ashamed of bringing me up in front of their in-laws or their family members or their this or that, and not just, and they didn't have like, oh, we're ashamed of you. It's like, we're ashamed of you, and here are 3 reasons why, and here are 5 stories why we are ashamed of you. My sister went first, my mom went second, my dad went last. My dad was barging in the middle as well because he screaming. So it's like, all 3 of these important people in my life, the most important people, the most important people in my life, every single one of them I'm saying, we are ashamed to bring you up in front of anyone because of the faces that people make, because लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे. और मैंने कहा ज़िंदगी भर हमने बस यही सोचा है कि लोग क्या सोचेंगे, और अगर हम यही सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, मुझे ये बता दें. Like, it's such a funny rhetorical question कि अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, you know. तो लोग क्या सोचेंगे फिर. So the fact that you are outspoken and you speak about things and you show your vulnerabilities and you just tell them what's wrong. I tell them what's wrong. I make it very, I'm very open about my views. I'm very open about my mental health, and the reason I'm very open is not because कि मुझे कोई famous होना है, is because 2 बंदे सुन लेना, bro, don't go through what I went through, because I genuinely was about to kill myself. So if you hear this and you're going through something like this, I would love to share my story and how I wasn't able to kill myself, and how you shouldn't be able to kill yourself either. Because I had a noose on my neck at one point, and I had written a suicide note, you know. So I was in that situation. This is the reason why I share what I share, and I am very open about it. So, and on top of that, I'm very open about my beliefs with Pakistan as well. Like, I'm straight up, like, Pakistan के साथ मैं मुंह पे बोलता हूँ, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये सारी चीज़ें, और फिर पूरा पाकिस्तानी अवाम मुझसे नफरत करती है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अपने बारे में असली सच नहीं सुन सकती. ये मसला है. So, why do you think you're the 3rd worst country with a passport? You're below Syria. You're below Palestine, which is not even recognized as a state. You are that country. And you are telling me कि नहीं हम बहुत cool हैं. You put your leader in... Anyways, this is ADHD kicking in. But like, yeah, so that happened. And then obviously, like, when you grow up, you look at your family, and it's an innate feeling within you that you want to make your family proud, you want to make your parents proud, all of those things. It's a basic need. It's a basic, I wouldn't even say it's a basic need per se, it's just a basic feeling. I would say it's a basic feeling that every kid has. You know, it's not something bizarre, it's not something out of pocket, it's literally like, bro, ये genuine एक चीज़ है. You know, आप बोल दो आप मुझसे प्यार करते हो, आप बोल दो आप प्राउड हो मेरे साथ. एंड फीलिंग नीड से आती है. और अगर आपको ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं है ना कि ज़िंदगी में मैटर क्या करता है, तो अब्राहम मैस्लो उसकी हायरार्की ऑफ नीड तो आई थिंक हर स्टूडेंट नहीं सुनी होगी, हम पढ़ते हैं उसको. तो सबसे बड़े लेवल पे सबसे बड़ी नीड हमारी है फूड, बायोलॉजिकल नीड, स्लीप. यू नीड टू ईट, यू नीड टू स्लीप, यू नीड टू ड्रिंक वाटर एंड यू नीड टू ब्रीथ. सेकंड आता है योर करियर, योर पर्पस ऑफ लाइफ, कि आप सुबह उठे और आपने कुछ किया. और सेफ्टी, सेंस ऑफ सेफ्टी टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड. एंड द थर्ड नीड इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस. Love and belongingness. And love and belongingness में now comes your primary family, your primary caregiver, your lover, your partner, and your friends and society where you belong. अगर इन तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं पे ख़राबी आ रही है, तो चौथा लेवल है सेल्फ इस्टीम. आप कभी भी सेल्फ इस्टीम तक क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट है नीचे
किसी के पास खाना नहीं है तो किसी के पास जॉब नहीं है, तो किसी के पास रिश्ते नहीं है, और पाकिस्तान में तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान में सारी प्रॉब्लम। तो चौथा लेवल आता है सेल्फ इस्टीम का, और जब किसी की सेल्फ इस्टीम लो होती है तो डिप्रेशन किक इन करता है, जब किसी की सेल्फ इस्टीम लो होती है तो एंग्जाइटी किक इन करती है, और पांचवा लेवल आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि जो भी पर्पस था मेरी ज़िंदगी का, जो भी एनर्जी थी मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी गुड, एवरीथिंग हैज़ बीन सॉर्टेड आउट। और अब हमारे साथ क्या होता है, यहाँ तो हम रोटा कपड़े मकान के चक्कर में फंसे रहते हैं, या जो है अब्बू ने आग कर दिया है, या अम्मी ने बोल दिया, या हस्बैंड ने चीट कर दिया है, या भाई ने घर से निकाल दिया है, कुछ ना कुछ तो फंसा ही रहता है। तो इसलिए डिप्रेशन और एंग्जाइटी किक इन करता है। Does that mean, and correct me if I'm wrong, but the first three things, the food, necessity, all of this, and then it's the second one was the sense of belonging. No, second one is sense of safety. Sense of in terms safety. of your purpose, your job, your anything that you would provide you shelter. So Yeah, basically shelter. Shelter. So basic human necessity, and then the third one is loving and belongingness. Do you mean to say that these are three prerequisites before you have any sort of self-esteem? These are the three prerequisites to have high self-esteem. High okay. क्योंकि कोई ना कोई तो चीज़ ठीक चल ही रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज़ ही ख़राब चल रही है, कहीं ना कहीं पे तो अच्छे बिलीफ्स भी इंस्टॉल हुए हैं हम में। तो सेल्फ एस्टीम है, अब वो लो होगी या हाई होगी ये डिपेंड करता है कि हाउ अमेजिंगली यू फिगर्ड आउट दीज थ्री एरियाज। Okay. So व्हेन पीपल से कि आई डोंट हैव अ नीड टू बी इन टच विद दैम, और आई शुड नॉट फील, व्हेन वी फील गिल्टी कि मुझे क्यों उनकी वैलिडेशन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ, आप लोगों ने कितना बुरा किया है, तो भी आप अपने सबकॉन्शियस के साथ फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे वैलिडेशन जो है, जब आप दुनिया में आए हो तो दैट इज़ द फर्स्ट नीड, यू नीड टू फील सेफ इन देयर हग एंड इन देयर वार्मथ। तो ये बेसिक नीड है टू फील वैलिडेटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। सो व्हेन दे टेल यू आई एम अशेम्ड ऑफ यू, this hits your self esteem indirectly. It's not just like मैं ऐसे बोल रहा हूँ, oh they just called me and said it like 30 minutes पहली दफ़ा ज़िंदगी में, now मैं रो रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी भर सुनी, अपनी ज़िंदगी भर सुनी ये बात, and that is why you might, when you said like you've done so many things, mashallah, successful, I don't feel that. I gave a TED talk. As soon as I was done, I had an insane depression, depressive attack. And then I went through depression for like 2 weeks straight. Like 2 weeks straight, intense depression. So Umar, I really want to ask you कि जब आपने बोला कि वो जो फिजिकल पेन मेरे यहाँ पे होती है, फ्लोर पे लेट रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अगर what anxiety means to you, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत सारे लोग ये वर्ड बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो व्हाट एंग्जाइटी मीन्स टू यू, हाउ वुड यू एक्सप्लेन कि जो कोई आम बंदा सुन रहा है तो वो कैसे समझे, कि वो कैसे आपसे रिलेट कर सकता है कि दिस इज़ एंग्जाइटी? Okay, that's a very good question because I don't have social anxiety. I'm a very extroverted person. I'm very outspoken. I give debates, I do debates, blah, blah, blah. So you can argue that I don't really have much anxiety. I can go on a stage in front of 2,000 people, and I've done that without any script, and I've literally just did the entire event, you know, and gave a speech, and everyone's happy, blah, 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 and everyone's intrigued. So you can argue कि मेरे अंदर anxiety नहीं है. You can make that case. मेरे अंदर social anxiety नहीं है, but मेरे अंदर self-critical anxiety है. I don't know how, like, what's the difference, if there's a term, whatever. But मेरे अंदर social anxiety in the sense of मैं जाके किसी से भी बात कर सकता हूँ, मैं जाके किसी से भी कोई connection बना सकता हूँ. I can take rejection and not feel anxious, whatever it is, you know. लेकिन the self, जो मेरी अपनी self है ना, मैं उसके साथ बहुत critical हूँ. And it's like I should be, you know, calm, like I should be more what's the word, but like more, what's that word, like I should be more gentle with myself. Like मुझे gentle होना चाहिए अपने साथ, मुझे थोड़ा अपने आप को थोड़ा relax करना चाहिए. नहीं, you are okay, you're doing good, ये वो, here's a pat on the back. So you're always on the go? Because it's like next thing, and it's at the age of 22, 23. Google did their when I was 22. Google did their official event in Dubai, in Karachi, in Pakistan. I was invited by Google. I couldn't share that with my family.
Why can't I share that with my family? Because I'm still in uni. Why am I wasting my time on going to Google events? I had been invited to TED Talks 3 times. I only accepted the 3rd time. Why? Because the first time I was like, what am I going to do? How am I going to bring it up to my parents? What is this bullshit that I'm with? I became a national level debate champion. I won the trophies. I had like in my bag. Didn't tell my dad nothing. He was picking me up from uni, from school, from college. He was picking me up, and I hid the trophy in my bag. Kids in my uni, because पूरा college पागल हुआ है कि national जीत गया ये तो, so everyone's coming and मिल रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं. मेरे अब्बू पूछ रहे हैं लोग आ क्यों नहीं तुम्हारे. मैंने कहा पता नहीं क्या पागल हो गए, पता नहीं क्यों मिल रहे हैं मुझसे, बस मैंने शायद स्पीच दी थी, बस खत्म. मैं ये भी छुपा रहा हूँ because it's just because for them it's a waste of time. It's a complete waste of time. So for them the productivity of your time is the grades and doing जो your कि degree. by the way are not bad. I'm a straight A+ student. So मैंने इंटर किया था, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की, मैंने मैकेनिकल की. मेरे अब्बू को लगता था मेरी औकात ही नहीं इंजीनियरिंग करने की. मैंने मैकेनिकल टॉप टियर मेरिट पे लिस्ट वो उठा ली, सीट उठा ली इन अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, राइट. ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपसे पैसे भी नहीं ले रहा यूनिवर्सिटी के. ऑन टॉप ऑफ दैट मैं अपना क्या कहते हैं, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. सो एट लीस्ट why am I doing so many diverse things? Why am I hanging out with like let's say like why am I doing why am I a YouTuber? Why am I starting a streetwear brand? Why am I making an app? Why am I also doing mechanical engineering? Why am I also doing this? Yes, you can argue I'm trying to figure out who I am as a person, and that's what you need to do when you're in your 20s. That is one of the reasons. But one of the main reasons why that is because I was trying to figure out which avenue will make my father proud of me. Because the mechanical engineering didn't do it, and I've heard my entire life that this will make it happen. That didn't fucking do it. So let's just go become a YouTuber. Let's not ask him for money. Maybe that will do it. Nope. Maybe let's pay for the electricity bill every month so that he doesn't have to bitch about the fact that I turned the AC on. Here is the electricity bill. Still an issue. And so it's like, regardless, I became the youngest TED speaker at the time when I was giving my TED talk. TED क्या स्पीकर हो जाती, हम क्या करें इसका, इससे फ़ायदा पहुंचा, इससे कोई क्लाइंट मिला तुम्हें, कोई पैसे मिले, कुछ हुआ, इन्होंने इनवाइट किया था, ये किया था, पैसे कितने दिए, ये अचीवमेंट नहीं हो सकती सिर्फ. I do get you, Umar, and I think I've seen that also growing up. I have observed in so many clients, even during my training, even during my practice. I think these are the stereotypical beliefs, and this is the very restrictive and inflexible mentality जो हमारे culture में engraved है, क्योंकि उसकी भी एक history है. I'm not trying to defend your parents, but मैं क्या No, you can defend my parents. I actually really like them. So नहीं, ये हमारी एक हिस्ट्री है, क्योंकि जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है, जो हमारी जेनेटिक हिस्ट्री रही है, वी हैव बीन वेरी रिप्रेस्ड. और जो तरक्की जो है उनके लिए प्रोडक्टिविटी और तरक्की है पैसा कमाना और ग्रेड्स लेके आना, क्योंकि दिस वाज देयर सर्वाइवल मोड. दिस इज़ हाउ दे got up, maybe from different people, right? This is how they survive. So they force that mentality हम पे भी, क्योंकि because they want us to do certain things. लेकिन वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, बस ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही. और आई थिंक इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. इसीलिए ये जो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स और जो बिलीव्स और इनफ्लेक्सिबल थाट्स हैं, अगर ये सदियों से चले आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है और अब इसको बस चलाते जाओ. बिल्कुल. आई थिंक वी ऑल नीड टू टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट के this didn't work for me. This didn't work for my child. My child went into clinical depression. It means कुछ हुआ है. So let me reflect. Let me see. Let me open my mind कि मैं कुछ पढ़ सकूं, कुछ सीख सकूं कि कुछ तो गलत हुआ है और उसको फिर रेक्टिफाई कैसे किया जाए. This is the problem कि हमारे elders जो हैं, they are not ready to accept के they are not open to learn different things what they have been taught. You are yes, I agree with you 100%. But when your parents are 70 and 63, you can't really change their beliefs. Yeah. You can't really do that. First of all, you can't really change anyone's beliefs. It's very difficult to do that anyways. And then something that's so engraved within you, and now you're 70 and you've lived your entire life like that, you can't really change them. What you can do, however, is accept how they are,
be happy that they gave you a life, alhamdulillah, that you still have a relationship with them. And regardless of how difficult that relationship might look, regardless of कितना मुश्किल है इनसे बात करना और ये क्या हर वक्त मुझे ये करते हैं वो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्जिस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और एटलीस्ट ऐसी ज़िंदगी दी कि मैं सोच सकता हूँ अपने लिए. You know, like I'll give you a little small, like I went to a Zakir Khan show, like a comedy, Zakir Khan एक comedian है. So I went to his show, full sold out Coca-Cola Arena. His show was all about the traumas that his dad gave. Like बहुत मज़े तरीके से, like dad trauma, like papa trauma, something along those lines. That was the name of the show. Sorry Zakir भाई गलत कह रहा हूँ. There's no camera there. Sorry Zakir भाई कुछ गलत कह रहा हूँ. So that's what his show was about, trauma, dad trauma. But in the end, he said something so beautiful that I was like, I have never looked at it from this perspective, and this is perfect. This is how I'm going to start looking at my parents now as well, so that I can, you know, build a better relationship with them. And what he said was, यार ये अपने माँ बाप को जो है ना, हाँ सही है, उनको ये बात समझ में नहीं आती, उनको तुम्हारा ये समझ में नहीं आता, उनको तुम्हारा ये समझ में नहीं आता, सही है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने जितना भी किया वो अपने ज़माने के लिबरल थे. ये तो सोचो, अपने ज़माने में, उनके ज़माने के अंदर अगर देखा जाए, उन्होंने पढ़ाई भी की, उन्होंने नॉर्म भी तोड़ा, उन्होंने, मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी का क्या कहते हैं डिप्रेशन को खुद फिगर आउट किया, took her to her first therapy session and then made sure कि she's on her proper meds. ये अपने ज़माने का लिबरल है ये आदमी, you know. 100%. But what I would like to add कि हम मानते हैं कि वो अपने ज़माने के लिबरल हैं, और ये भी मैं जानती हूँ कि you cannot change their thoughts, you cannot change their beliefs. अपने beliefs change करना इतना मुश्किल है, कहाँ आप let alone आप दूसरों के beliefs change करोगे, right? 100%. But if it is, this is the reality, right? Yeah. But that does not mean it's easy. No. That does not mean that it does not impact you. So understanding कि कुछ तो असर हो रहा है मुझ पे, and then acceptance of it, and then figuring out कि मुझे impact किया है, ये असरात हैं इसके. Now how I'm gonna deal with those symptoms, how I'm gonna deal those impacts that my body feels, that my mind feels, and that's your recovery journey. So the question is, from me to you as a psychologist, as a simple person asking this question, okay? As a psychologist, you're a behavioral psychologist, right? CBT and trauma therapy. और कुछ रह गया तो वो भी बता दें. CBT का full form भी बता दें. Cognitive behavioral therapy. And EMDR is eye movement desensitization reprocessing. वही वाला. बहुत आला. मैंने भी यही किया है. From a simple psychological perspective, what are the 3 things that you suggest to someone who is going through, regardless of how big the issue is or how small the issue is? An issue is always big when you're talking about it on your own, when you're feeling it on your own. It feels big. So what would be the 3 things, the 3 easiest things someone can do that would help them alleviate that? Like ये चली जाए, like ना चली ना जाए लेकिन ease down हो जाए. जैसे मैंने बोला ना, जाके swimming कर लो, जाके exercise कर लो, ये वो. What are things that you have suggested to people, you have suggested to your clients, that is going to help them deal with, you know, maybe slightly deal with, or maybe make it bearable, that they at least make it throughout the day? What are those 3 things that you would suggest? I would say कि सबसे पहले तो हमें पता नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है. So most of the time एवरीडे लाइफ में दिल में भी कुछ हो रहा है, दिमाग में भी कुछ हो रहा है, स्टमक में भी कुछ हो रहा है, लेग्स में भी कुछ हो रहा है, हर टाइम बेचैनी सी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बेचैनी है, बस बेचैनी है. तो सबसे पहले तो 5 मिनट अगर दिन के अगर आप ये ले लें और आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर लें और फिगर आउट कर लें कि वेयर डू आई फील हैवी इन माई बॉडी, डू आई फील इट इन माई चेस्ट, डू आई फील इट इन माई स्टमक, डू आई फील इट इन माई लेग्स और इन माई हैंड्स. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू क्लोज योर आइज and connect with your body, because whatever you go through, whatever feeling you are experiencing is impacting your body. So the moment you pick up that feeling, then that sensation, you need to ask yourself, what am I feeling right now? So most of the time when you ask anybody what are you feeling, उनके पास 4 लफ्ज़ होंगे: happy, sad, angry and anxious, frustrated, right? But there are
thousands, 10,000s of names of different emotions that we can give to our feelings. तो सबसे पहले तो हमारे पास वोकैबुलरी ही नहीं है. तो अगर आप गूगल कर लें कि व्हील ऑफ इमोशंस, उसको अपने सामने रख लें. So you connected with your body. You're like, okay, my chest is funny, bit funny. So what am I feeling right now? So you look at this circle and you'll be like, I'm overwhelmed. Okay. Maybe I'm jealous. Maybe I'm feeling disconnected. Maybe I'm feeling agitated. So figure out and give name to this feeling. Give a name to the feeling. Name. It's very important. Because जब वो feeling है तो वो हमारे frontal lobe में नहीं है. And frontal lobe is all about logic. And verbal area is controlled by the frontal lobe. So the moment you give a name to your feeling, it starts to come to your frontal lobe and it starts to make a logic to you. Yeah. And that makes so much sense, because then you start looking at it from that, okay, now I know what to search for and how to fix this. Yes. So verbalize your feelings. Then connect with your body. So verbalize your feelings. Connect with your body. Verbalize that feeling, whatever you are feeling. And then whatever you are feeling, you have to understand that your brain needs more oxygen to process that emotion. Okay. Because whenever our feelings are overwhelmed or it's too much, our brain does not receive oxygenated blood. So you need to breathe. Nostril से आपको nostril से breathe करना है. So the moment you will breathe from nostrils, your brain will receive oxygen. Wow. Okay, so breath work is essential. So you have to understand कि आप खुद को भी देखना या किसी को भी देखना, ज़्यादातर लोग मुंह से सांस ले रहे होते हैं. Oh, ये तो अल्लाह माफ करे. I went to a breathwork thing. Those are 3 solid things. Verbalize the feeling. First of all, identify the sensation. So give yourself 5 to 10 minutes where you're just thinking about that. Second is verbalize that. So put a wheel of emotions and look at what you're feeling and why you're feeling that way. So maybe write that down as well. Journal a little bit. Yes. And then what I'm gonna do? I'm gonna close my eyes. Okay, if my stomach is feeling funny, I'll be keeping my hands on my stomach. Validate that feeling, and then I'm gonna take a deep breaths. Okay. So I'm gonna let it go. Okay. And this is where you can really like go through your day. You know what's really beautiful that you said the thing about the breath work is, I went to a breath work section yesterday and I really started appreciating breath work after I learned this, which is even Quran even in the Holy Quran, when God talks about He blows air within your soul or within your body, He blows it within you. Okay. Now, what does that mean? That means we have Allah's Noor within us, and obviously not a scholar or a psychologist or anything. I'm just a marketer who makes videos, bro. So, and have some like very strong opinions. Allah Himself talks about breath work, that He blew His own breath or like His own Noor within you. So if you focus on your breath, and even in multiple occasions, I can't come up with many references, but there's multiple occasions where even, let's say, even in Cave Hira, when Prophet Muhammad, peace be upon him, got his first revelation, what do you think he was doing? He's an Arab man who's 40 years old at night in a cave meditating? What kind of man is this? So what is he doing? He's calming his senses. He's breathing properly. He's internalized, because Allah ne aapke andar वो सांस डाल वो अपनी ही सांस वो क्या कहते हैं हवा वो क्या कहते हैं air, like he blew air or whatever, he blew it inside you. And I'm sorry if I'm wrong, comments, please don't kill me. Lekin no, he put that within you, and if you are able to regulate your breathing, then you're able to provide oxygen to your brain properly, and then you're able to regulate the emotions in your brain. That's why they say go do exercise, because it puts oxygen within your brain. It's all about that. That's insane. It's all about the oxygen and oxygenated blood and deoxygenated blood. Maybe हमने अपने middle school में पढ़ा होगा, सब नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से. मैंने नहीं पढ़ा. अगर आपके brain को oxygenated blood नहीं मिल रहा, yes, तो आपके ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे. Oh. तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा.
Okay. जितना ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड करोगे उतना आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो लो रहेगा एंड यू विल बी एबल टू काम. So Okay. if you just learn to provide oxygen to your brain cells, you'll be fine. ऐसा you're नहीं able कि to ट्रॉमा provide- हील हो जाएगा, बट वो जो सेंसेशन है ना बेचैनी की, here and there it will get better. Yeah. Yes, but whenever it comes to clinical depression or clinical anxiety, you need to seek professional help. One more question. So one of the main things जो मेन चीज़ मैंने देखी ना पाकिस्तानियों के अंदर और जो मेरे अंदर भी है और बहुत सारे लोगों के अंदर, मैंने अपने दोस्तों के अंदर देखी है, वो ये कि वो वैलिडेशन और अप्रूवल चेस करते हैं बहुत ज़्यादा. वैलिडेशन और अप्रूवल या फैमिली का हो या दोस्तों का हो या स्पाउस का या उस लड़की का हो जिसको मैंने टिंडर पे देखा था, किसी का भी वैलिडेशन और वैलिडेशन चेस करना बहुत एक बड़ी चीज़ है. और वो जब वैलिडेशन नहीं मिलती या फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो आपका बेसिकली यू आर नाउ वर्थलेस, कोई पॉइंट नहीं है आपकी ज़िंदगी का. एंड दिस इज़ हाउ I have seen many people who have even like following. Let's say I could have 30,000. मेरे पास like what 30,000 followers हैं. आपके पास कितने सारे लाखों followers होंगे. So like all of these people like, so if you're chasing this sort of validation, you post a picture, 2 बुरे comments आ जाते हैं, आपकी validation खत्म, आपकी acceptance खत्म, आपकी ये जो आप chase कर रहे हैं वो खत्म हो गया. What is your advice to people like that? Because that becomes the stepping stone for you to actually start hating yourself, start doubting yourself, start vibrating on a very low frequency, and then end up getting depressed or diagnosed as depressed or anxious or anxiety, and then I am not good enough and all of these thoughts. What is your advice to those kind of people who are chasing validation for the sake of like maybe like why are they chasing validation and what should they be doing instead so that it doesn't lead to that depressive state? This is a question that I really wanted to ask. Please. So the question you asked, it requires me at least 1 hour to make you understand why it happens, how it happens, and what we can do about it. But if I have to summarize it and close our session, obviously there are lots of things I wanted to talk to you, but obviously always we have this limitation of time, and yeah, that's fine. But I think we spoke about it. कि love and belongingness and validation is a part of human nature. So if you ever say that I'm not gonna chase validation, I'm not gonna chase somebody's love or somebody's approval, you are actually making yourself fool. Because we have to chase that. We want that. We want that to build a human connection. We want that to build a community and love and belongingness. And we need it. So nobody can say कि I don't need it. Now, the problem is when it goes beyond control, when it goes beyond healthy limit. और वो कैसे होता है कि वो जो पहले वाले जो है ना बेसिक नीड्स, आपके बेसिक नीड्स पे ध्यान नहीं है, या जो आपका शेल्टर और पर्पस की बात कर रहे हैं उसमें कहीं पर ख़राबी है. एंड मेजर रीज़न इज़ आपके सेल्फ बिलीफ जो होते हैं ना वो बचपन में बन जाते हैं. तो बचपन से लेके 8 साल तक जो बिलीफ आपने अपने बारे में बना लिया है ना, जब तक सबकॉन्शियस वो उस बिलीफ को आप चैलेंज नहीं करोगे इन थेरेपी और बाय लर्निंग मोर, यू विल नॉट स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन. Okay. सो देयर इज़, हाँ, ऐसा नहीं है क्योंकि अगर किसी ने आपकी पिक्चर को लाइक नहीं किया ना तो बेसिकली आप उस लाइक पे नहीं रिएक्ट कर रहे. आप आई डोंट नो मे बी 7 साल में टीचर ने आपको नहीं चुना होगा स्टेज पे जाने के लिए, किसी और को चुना होगा. सो बेसिकली योर बॉडी इज़ रिएक्टिंग टू दैट, नॉट टू दैट कमेंट. Really? Wow, I should do a session with you. But so it's not about it's the amount of importance you place on that validation and acceptance. So I would say what they can do, they can really consciously limit their time on social media. They can consciously limit their exposure to these situations के पता है कि अब मेरे में खराबी है, मैं वैलिडेशन चेस करती हूँ लेट्स से, तो अभी मुझे कैसे खुद को कंट्रोल करना है. ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ कि भाई तुम वैलिडेशन नहीं चेस करो तो वो बंदा करना छोड़ देगा. नो, ऐसा नहीं होता. That person has to go back to the subconscious core beliefs, and that I have a list of 35 core beliefs, and if I'll give you, I think you'll circle 25. Okay. क्योंकि वो जो core beliefs हैं ना वो हमारे बचपन में बन जाते हैं. और वो जो core beliefs जब बन जाते हैं और वो फिर 21 तक होते होते जो भी आपके circumstances हैं वो गहरे हो जाते हैं. अब जब तक आपने थेराप्यूटिक वर्क नहीं करना उन कोर बिलीफ्स को चैलेंज करने के लिए, तब तक ये आप चेज करना बंद ही नहीं कर सकते जितना मर्जी जोर लगा लें. Crazy.
Yeah, so that it's very complicated. But anyways, Beautiful Umar, podcast. I love what you do. I love the way Jazakallah. you have been coping your situations. Thank you. मेरी आपसे पर्सनल भी बात हुई थी फ़ोन पे. I got to know you from your Instagram. I did a lot of research on you. तो इतने सारे challenges के मे बी आज हम ज़्यादा नहीं बता सके, but Umar has been going through clinical depression, OCD, and there has been a history of certain traumas. और उसके बावजूद भी Umar keep going. And he's been coping, he's been Alhamdulillah. managing. Yeah. And I'm so proud of you, and Thank I'm you. so glad that you are open to seek therapy. Can you call Not my only dad to and seek, say- not can you call only my to seek dad and therapy, tell him? not only to seek therapy, you are open to talk about Yeah. And getting a help. it's And thank you so much for saying that, because बहुत सारे नौजवान जो आपकी एज के हैं वो जो हैं वो आपको सुनेंगे और मे बी दे विल थिंक कि यस आई नीड हेल्प मे बी. वो दो चीज़ें सोचेंगे, या तो फट्टू है या तो बोलेंगे ओ इसका हेल्पफुल है. Those are literally the two Thank you reactions. so much that I for get. being here and being you. Thank you so much for having me, and thank you Thank so much for you. the amazing advice. Jazakallah.